ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए यहाँ पे जो व्यूज इसके गिवन है, ये आइसोमेट्रिक व्यू एंड देन ये इसका टॉप व्यू आपको गिवन है। और इसके जब सेक्शन व्यू जो यहाँ से कट करेंगे इस पोर्शन से हॉरिजॉन्टली, तो आफ्टर कट जो पोर्शन आपको मिलेगा वो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ जब ये राउंड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ पे रिवॉल्व बॉस बेस का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ करेंगे हाफ सेक्शन व्यू जो है उसका, उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉलिड वर्क स्क्रीन पर आते हैं यहाँ पे, और मैं इसमें यहाँ से स्केच फ्रंट प्लेन लेता हूँ इसमें, एंड लाइन लिए सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन मैंने यहाँ से लिया इसके लिए, एंड ठीक है, एंड देन टेक लाइन, और एक लाइन लीजिए, इसको यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ इसको 77। ठीक है, नेक्स्ट, देन अगेन ये यहाँ पे जो है 60 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो देखिए, इनर लेंथ यहाँ पे 25, 37 एंड 15। देन ये 25, ओके, एंड देन 37 एंड 15। ओके, नेक्स्ट अगेन ऑफसेट, एंड ऑफसेट लीजिए 5 का, आप यहाँ पे 5 का ऑफसेट दीजिए इसको। ओके, आउटसाइड 5 का ऑफसेट, एंड सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट। Okay, then again specify the diameter from this point to this point, which is 40 or 37, so 35. Okay, 70 and then yes 60. Next, then again specify the dimension. Okay, outer dimensions यहाँ पे 20 and 37 and 30. Okay, then again take and hold the control key and make horizontal. Okay, now okay, and select the diameter 40 and 50. Take smart dimensions and .50 diameter. Okay, and then again 40 diameter. Now select the line, and the line make collinear. Okay, now the sketch is fully defined, and close the sketch. Okay, select it, right click, exit from sketch and feature revolve boss base. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ये जो आपने सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है वही है, एंड देन 360 डिग्री आपने इसे रोटेट किया है, देन ओके।
सो आई होप कि क्लियर हुआ हो इससे। प्लेन व्हाइट यहाँ से प्लेन ले लीजिए, देन राइट क्लिक एंड अपीयरेंस पार्ट, ओके, चूज कलर फॉर इट, और मैं यहाँ से कर देता हूँ ये, एंड देन ओके। नाउ फाइल, सेव द मॉडल, ओके, एंड देन फाइल, make drawing from part, browse, select your standard sheet, okay, and drawing model, do left click on it and preview, और यहाँ मैं लेता हूँ उसका टॉप व्यू एंड ओके। सेक्शन व्यू हॉरिजेंटली यहाँ से कट करेंगे इसको, एंड देन ओके। नाउ सेलेक्ट, set it with edge, left click and right click and put here. Now annotation, model, entire model and import item into all views. Now okay, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो शो हो गए हैं। आप इसको डिलीट करके यहाँ पे डायमीटर पे शो कर सकते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट इट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, ओके। नाउ 40 एंड देन 20, 70 and 20 or 30, or you can also align these. Select these and hold the control key and select the dimension and right click, align and align यहाँ पे vertical, okay. Next, select this and this, and now right click and align vertical, okay. तो यहाँ पे then so I hope कि clear हुआ होगी आपको। लास्ट पार्ट इसमें फाइल एंड देन सेव एज यहाँ पे चूज कीजिए, सेव एज टाइप में एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर जनरेटिंग द पीडीएफ एंड प्रिंटेड, ओके। आई होप कि क्लियर हुआ हो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।